Okay, let's start. Paper 6 Alternative to Practical Biology 610 Paper 62 May June 2021. Duration is 1 hour. Question number 1. Catalase is an enzyme found in living cells. It catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to form water and oxygen. In this investigation, a celery extract was used as a source of catalase. So, we can make its extract को ग्राइंड करके celery लीफ को तो हम इसका एक्सट्रैक्ट जो है बना सकते हैं. ठीक है. A student investigated the effect of catalase concentration on the rate of oxygen production. So हम इसका effect देखेंगे. Oxygen production. The student made 5 different concentrations of celery extract by diluting the celery extract by 50% in each successive dilution. Step 1. 5 beakers were labeled A, B, C, D, and so you have to take 5 beakers. A, B, D, and E. A 10 cm cube measuring cylinder was used to place 10 cm cube of celery extract into beaker A. So we have to place about 10 cm cube of celery extract. Beaker A. The same measuring cylinder was used to transfer 5 cm cube of celery extract from beaker A to beaker B. So we add 5 cm cube here. Okay. The same measuring cylinder was used to add 5 cm cube of distilled water to beaker B. And we add distilled water also 5 cm. So total will be 10 cm. Okay. 5 plus 5, 10. Water. The same measuring cylinder was used to transfer 5 cm cube of celery extract from beaker B to beaker C. 5 cm cube of distilled water was added to beaker C. So यहाँ से हमने 5 cm extract. Again अब ये 10 हो गया. We 5 cm cube here and also add distilled water 5 cm. अभी आप देखें तो ये dilute हो जाएगा. ठीक है. Then again from C to D we step repeat करेंगे. Water 5%. Then from D to A same step जो होगा follow. So each beaker has 10 cm cube but dilute solution. ठीक है. Table 1.1 shows the concentration of celery extract in beaker A to E. This is our table. A, B, C, D, E. Percentage concentration of celery extract 100. A में 100% थी, B 50 and C then D 12.50, E 6.25. So जैसे आपको पता तो आपको लग रहा है कि it is 25% होगा. ठीक है. कि हम करें बट कैलकुलेट कैसे करना है वो हम कर लेते हैं. तो साथ आपको जो है इसका आइडिया भी हो जाएगा कि कंसंट्रेशन को हमें कैसे कैलकुलेट करना है. Percentage concentration extract in
50% ऑफ बी, फिर हमने इसको बी में से स्कोर किया था उसमें, ठीक है। फिफ्टी परसेंट ऑफ बी it is 25 5 था 25। सो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकती हैं, और जो है वो इससे कैलकुलेशन करने से ये होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आंसर ठीक है। अदरवाइज जो है वो टेबल का सीक्वेंस जो है वो आपको बता देगा पैटर्न। Small filter paper discs were dipped into the celery extract in beaker A. The paper disc dipped in celery extract was placed into a test tube and was pushed to the bottom of the test tube with a glass rod. A syringe was used to put 18 centimeter cube of 1% hydrogen peroxide solution into the test tube. The apparatus is shown. पेपर डिस्क जो थी उसको हमने सेलेरी एक्सट्रैक्ट में डिप किया और उसको टेस्ट ट्यूब के एंड पर हमने प्लेस कर दी, ठीक है। एंड देन उसमें 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ सिरिंज उसमें हमने ऐड कर दिया। Okay, the student recorded the time taken for the paper disc to rise to the surface of the hydrogen peroxide solution। तो अब हम टाइम नोट डाउन करेंगे कि कितने टाइम में वो उसको जो है राइज होने में कितना टाइम लगता है। स्टेप 10 स्टेप 8 एंड 9 वर रिपीटेड यूजिंग द पेपर डिस्क इन सेलेरी एक्सट्रैक्ट बी सी डी एंड ई। तो सेम हमने बाकी सॉल्यूशंस के साथ भी करना है। We have 5 beakers A to E, then dipped paper disc in each beaker and add 18 centimeter cube of hydrogen peroxide and note down the time where these are reached to the riser. Okay, okay, note down the time. The time taken for each paper disc to rise are shown A, B, C, D, E. It is 24 seconds, 49 seconds, 1 minute and 7 seconds, 1 minute and 56 seconds, 3 minutes and 19 seconds. Last solution जो सबसे ज़्यादा dilute है, ठीक है। Now, prepare a table to record the result shown in the figure. Record all the times in seconds. तो हमने सब times को second में record करना है. So we have to make a table.
B, C, D, E, sublumen. So we make 3 columns, 1, 2 and then it is a header line, curator, concentration, and then time. Concentration level marker percentage and time marker. So make 5 rows, 1, 2, 3, 4 and now write down concentration is 50, 55, 12.60 and 6 point. Time is 24, then 49 seconds, then it was 67 seconds, 1 hour and 7 seconds, then 1 hour and 56 seconds, how it was 116 seconds, and then after this 199 seconds. Figure out the stated conclusion for this investigation. A higher concentration of the extract at higher concentration of celery extract or catalyst enzyme dictates
quickly rise हुई है. So when it is quickly rise, then what it means? Means oxygen production is higher as sodium hydroxide breakdown to sodium hydroxide. So, sorry, it is hydrogen peroxide H2. Identify the variable that the student changed, independent variable and the variable that was made dependent variable in this specification. So independent variable जो होगा वो हमारे पास होगा concentration of extract. ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास टाइम. The oxygen gas produced by the reaction form bubble in the paper disc. The bubble caused the disc to rise to the top of the hydrogen peroxide solution. The time taken for the disc to rise can be used to calculate the rate of the reaction. Explain how you could calculate the rate at which the disc rises. तो आपने उसका सिंपल जो है वो फॉर्मूला बताना. So you can write no, हमने उसका बेसिकली कैलकुलेट कैसे करना है. At which the disc rises by rises up. So we can write. अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है ना. So we can write we can calculate the rate at which the disc rises up by dividing height of hydrogen peroxide by time and बस by time. Distance नहीं आएगा इसमें. ठीक है. By the time. ठीक है. Height divided by time. Identify one source of error in step 4.
इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे सो वी हैव टू यूज सेम मेजरिंग सिलेंडर, सेम मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू ट्रांसफर वाटर। तो वाटर यूज करें तो उसमें ये हो सकता है कि आपकी कंटामिनेशन आ सकती है एंड देन आपका उसमें सोर्स ऑफ एरर हो सकता है कि जो मेजरिंग सिलेंडर में जो एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन वो भी चेंज हो सकती है। सारी बात मेजरिंग सिलेंडर में जो एक्सट्रैक्ट रह गया था वो भी जो है उस बीकर में जिसमें कि हम ट्रांसफर कर रहे थे तो उसमें ऐड हो जाएगा वाटर के साथ। ठीक है। डिस्क्राइब अ सुटेबल कंट्रोल फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। कंट्रोल हम कर सकते हैं कि हम सैलरी एक्सट्रैक्ट जो पेपर डिस्क है उसको हम वाटर में सोक कर दें। ठीक है। टू सैलरी डिस्क इन वाटर करने के तो उसमें जो है वो डिनेचर हो जाएगा। सो वाटर में करेंगे तो वो एज अ कंट्रोल ही हमें उसको रखना है। नेक्स्ट, sodium chloride affects the activity of the enzyme catalase. This enzyme catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to release water and oxygen gas. Hydrogen peroxide, water plus oxygen. Plan an investigation experiment to determine the effect of sodium chloride concentration on the volume of oxygen gas produced during this reaction. So we have to plan this investigation. तो इन्वेस्टिगेशन प्लान करने के लिए सबसे पहले जब आप ये देख लेते हैं अपना क्वेश्चन तो उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर देते हैं उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म सो दैट आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, कौन सा अपरेटस यूज किया है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अपरेटस कौन कौन सा यूज होगा इसमें उन्होंने हमें कॉमन लेबोरेटरी अपरेटस नहीं मेंशन किया। ठीक है। सो टेस्ट ट्यूब्स मैं साइड पे लिख दी। टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन के मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इसमें अपरेटस की मटेरियल syringe, test tube, measuring cylinder, and then आपके पास आ जाएगी stopwatch,
करते हैं. Okay. So first of all, we prepare a different concentration of sodium chloride. ठीक है. Different concentration of sodium chloride solution. ये हम बना देंगे फॉर एग्जाम्पल 0%, तो 4% तक कर लेते हैं. 1%, 2%, 3%, 4%, about 5% हमने रेडी कर. Prepare containing same amount of hydrogen peroxide and catalyst. तो catalyst ले सकते हैं, आप पोटैटो एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं. ठीक है, आप yeast सस्पेंशन ले सकते हैं. In each test adding sodium chloride solution of different concentration. ठीक है, आप different concentration के साथ उसको जब आप solution prepare किया तो आपने add कर देना है. These are the test tube 1, 2, 3, 4, 5. और आपके पास इनमें है H2O plus catalyst. You have to add sodium chloride concentration. तो आप 0, 1%, 3%, 4% is added. यहाँ से get got it. Yeah. Very much there. Again, syringe or an inverted bearing cylinder was left. Okay, gas volume set period time. So control variable आपके पास आ जाएंगे. इसमें temperature, pH, and then you have to repeat the experiment
analysis of protein. State the test for protein and state the result of a positive test. तो टेस्ट आपके पास आ जाएगा बायोयूरेट टेस्ट, उसको आप मेथड लिख दें चाहे जिस तरह से आप जो आपको उसका आपको आइडिया है बायोयूरेट टेस्ट। तो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट होता है इसका solution turns purple। यस बायोयूरेट टेस्ट हम इसमें जो है वो यस तो उसमें जो है आपका सोल्यूशन जो है वो पर्पल हो जाए।